नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश पर, जहां आपको मिलता है एग्जाम रिलेटेड कंटेंट, वो भी कंपटीशन एग्जाम्स के एंगल से, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी, नेट हो या कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो। तो आज है बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 4 और हम बात करने जा रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, जो है ह्यूमन एंड्रोक्राइन सिस्टम एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों टॉपिक्स एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे असर्शन रीजन हो या डायग्राम बेस्ड हो, एमसीक्यूज हो या वन लाइन आंसर्स हो। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए टू ग्रैब मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस कंटेंट, and do not forget to like, share and subscribe our channel as well, so that we can come up with more such exam related study materials for your benefit. तो सेक्शन 1 में हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। So the main function of the male reproductive system is the production of sperm and their transfer. First main organ है testes, जो है located in scrotum, which produces sperms and testosterone. And then comes epididymis, जहाँ पे sperm का maturation होता है. Comes the vas deferens, which is the sperm transport channel. Seminal vesicles, जहाँ पे fructose rich fluid बनता है. The prostate gland is responsible for the addition of the milky secretion, and then comes the penis and the urethra, which is the outlet for semen. Then comes the female reproductive system, which is responsible for the production of eggs, fertilization and also the carry-on of the fetus. जो पहला main organ है female reproductive system का, वो है ovaries, which produces ova and hormones like estrogen and progesterone. Then the fallopian tube, which is responsible and is the site of fertilization of eggs. Then comes uterus, which is the main development process and is the implantation of the eggs takes place here. Cervix is the organ which connects the uterus to vagina. And vagina is responsible for the birth canal and is one of the important organ of the female reproductive system. So from this section you can expect questions for the exam tip section, as from where does the fructose rich fluid comes from in the male reproductive system, and in the female reproductive system, which organ is responsible for fertilization, or which one is responsible for the implantation, which is the birth canal of the female reproductive system, and many such related questions. So note down each of the terms, and it is very important. So you need to know all the terms as well, as it can come in the match the following questions. Now in this section 2, we will know about the menstrual cycle, which takes place in the female human body systems, and which takes place on a regular time of 28 days average, which is the complete cycle of a menstrual cycle period. First menstrual phase, which takes place for 1 to 5 days, and it happens due to the shedding of the uterus lining. आता है follicular phase, जो है 6 to 13 days का period, and then जहाँ पे follicle improve होता है and it grows and estrogen also increases. फिर होता है ovulation day 14 में, जहाँ पे low hormone surge leads to the egg releases. Luteal phase, जो है day 15 to day 28, जहाँ पे progesterone supports the uterus wall. तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कि what is the period cycle, total days on average, and when does the ovulation takes place on which day, and how many days such a menstrual cycle in average exists, what happens from the 15 to 28 day cycle. Such type of questions you can expect from this section. Now section 3 is all about endocrine system, और endocrine system को माना जाता है बॉडी का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसी के थ्रू सर्कुलेट होता है, और इसी सिस्टम में जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं। चलिए मेन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। फर्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो है मास्टर ग्लैंड ऑफ द सिस्टम। इसका लोकेशन है बेस ऑफ ब्रेन में। जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, साथ ही साथ थायराइड स्टिमुलेशन एज वेल एज एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट भी करता है। The main organ is hypothalamus, which links the brain and the pituitary gland, and this organ is responsible for releasing, inhibiting and relaxing hormones. फिर आता है थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इस ग्लैंड में आयोडीन की कमी से कुछ डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि गॉइटर।
पैराथायरॉयड ग्लैंड जो फॉस्फेट एंड कैल्शियम से रिलेटेड हॉर्मोन्स रिलीज करता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड्स जो कॉर्टिसोल एंड एड्रिनल रिलेटेड हॉर्मोन्स रिलीज करता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन रिलीजर। फिर एक मेन ऑर्गन है जो है पैनक्रियास, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस नाम से भी जाना जाता है एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ सर्टेन काइंड ऑफ हॉर्मोन्स सच एज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो इस सेक्शन से जो मैं एग्जाम टिप आपको दे सकती हूँ वो है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म और विच disease is caused by the deficiency of iodine, what hormones does the pancreas release or the adrenal glands release, which is called the mixed gland, which is called the master gland, and many such related questions. Now in section 2 we will learn about the interconnections between these two systems, that is reproductive system as well as the endocrine system. Pituitary gland से जो hormones जैसे कि LSH और LH hormones release होते हैं, that helps in the spermatogenesis as well as the ovulation. Estrogen and progesterone is responsible for the controlling of the menstrual cycle. Endocrine system related diseases जैसे PCOS या diabetes directly reproductive systems को affect करते हैं and it disrupts their regulation. FSH stands for follicle stimulation and LH stands for ovulation. चलिए अब थोड़ा exams tips and smart study कर लेते हैं. Recap, that is ovulation takes place in the day 14 of the menstrual cycle and fructose rich fluid is released from the seminal glands. So goiter is caused by iodine deficiency and the master gland of the endocrine system is pituitary gland. Another name for adrenaline is emergency hormone, which is produced by the adrenal glands. And diabetes is caused by insulin deficiency. Book recommendation that I can give you is Trueman's Biology Volume 1. आप इसको follow करें और भी related facts के लिए and you will also get previous year patterns as well. तो दोस्तों, this is the end of the part 4 of the biology series. I hope you got to know about the endocrine system as well as the reproductive system of the male human body as well as female human body, and this video was informative to you. So if you have liked this video, do not forget to like, share and subscribe our channel so that we can come up with more such helpful content with more vast subject wise concepts for you. तो तब तक हमें सपोर्ट करें, ग्रो करें गवर्नमेंट दृश के साथ. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर. तब तक डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल. See you, take care, meet you in our next video. Stay tuned.